Okay. Hello, guys. The visibility is not good here. Just a second. Ouch, God. Okay. Yeah. Here. Okay. Sorry. Okay. So here I am live today. We are going to discuss about the MMPC001 classes, right? We are not left with so many days, and the exam is very near. It's on 19th, I believe. So let's study the topics. So here we go. The first topic that comes into the mind. Is there any option to share the screen because I'm making this video for the first time? Well, I'm not aware how. It's okay. I'll read it for you. I'll make you understand what MMPC 001 is basically about the management. And don't waste the time. Let's go ahead. So the first thing comes in mind that what is management? Management is the process of working with and through others to effectively achieve organizational objective by efficiently using limited resource in the changing environment. What is management? It says कि management is the process of working with and through others, right? अब मैनेजमेंट में करते क्या है बेसिकली हम मतलब लोगों के साथ काम करते हैं क्यों किस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को ताकि हम जो है अकम्प्लिश कर पाएँ उनको गोल्स को अचीव कर पाएँ राइट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स by efficiently using limited resource in the changing environment. एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रह रहा है और रिसोर्सेज हमेशा आपके पास लिमिटेड होंगी उनको ऑप्टिमम यूज करके जो मैक्सिमम आउटपुट है प्राप्त करना ही हमारे लिए मैनेजमेंट है लेट्स फोकस ऑन द अदर टॉपिक्स जो बहुत ही शॉर्टकट पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो अगला जो क्वेश्चन आ सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से आ सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेते हैं जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सही है जैसे मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस गोल ओरिएंटेड होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशनल टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स क्या समझ में आया कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके बेसिक गोल्स होते हैं है ना और विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस कुछ तो बेसिक मतलब गोल्स होते ही होते हैं और वही रीजन है जिसके वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं तो मैनेजमेंट जो है वो यूनाइट करता है और एफर्ट करता है विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए तो मैनेजमेंट क्या है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पहला है फिर मैनेजमेंट इज ऑल सॉरी परवेसिव राइट परवेसिव का मतलब क्या होता है यार मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता एक सेकंड हाँ मैं आपको गूगल करके बताना पड़ रहा है परवेसिव मीन्स इन हिंदी परवेसिव का व्यापक होता है फैलने वाला प्रसारित हो जाने वाला अच्छा ठीक है चलो आगे समझते हैं तो ये एक और उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल ये फैलता रहता है मैनेजमेंट तो जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं मैनेजिंग करने के लिए किसी भी एंटरप्राइज को वो कॉमन होते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहे वो इकोनॉमिक हो सोशल हो या पॉलिटिकल ठीक है आगे बढ़ता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है दैट हैज थ्री मेन डायमेंशंस मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब काम को बांटना पड़ता है सबके सबको अपना अपना काम देना होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशन इट implies dealing with employees as individual with diverse need and behavior it also means dealing with individual as a group of people the task of management is to make people work towards achieving the organizational goals by making their strength effective and their weakness irrelevant. Management of operation it requires a production process which entails the flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output for consumption. ठीक है ये मतलब इससे क्या समझ में आया मल्टी डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन होते हैं मैनेजमेंट के है ना एक ही तो है नहीं यूनि डायमेंशन तो है नहीं और इसमें क्या क्या है चीज़ें ये वर्क को मैनेज मतलब बांट रहा है दूसरों में पीपल को जो है पीपल के साथ क्या कर रहा है ये इम्प्लाइज विद डीलिंग विद एम्प्लॉयज it implies with dealing with employees as individual and diverse need and behavior it also means dealing with individual as a group of people
ठीक है, आगे टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। ठीक है, ये चीजें हैं मैनेजमेंट में। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो एक लाइन में समझते हैं, छोटा सा लाइन कहता है कि जो टास्क है मैनेजमेंट का वो है कि लोगों को बेहतर बनाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उनके स्ट्रेंथ को और इफेक्टिव करे और उनके वीकनेस को बिल्कुल इररेलेवेंट कर दे। ठीक है, चलो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इट रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस entails the flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output फॉर कंजप्शन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन में क्या होता है कि जो मटेरियल और टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को इनटू डिजायर आउटपुट फॉर कंजप्शन। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। These functions are simultaneously performed by all managers all the time. Planning, organizing, directing, staffing and controlling, these are the functions, right? A continuous process होता है, ये चलता रहता है। Management is a group activity. An organization is a direction is a collection of diverse individuals with different needs. Management should enable all its members to grow and develop as needs and opportunities change. Management is a dynamic function. Management is a dynamic function and has to adapt itself to the changing environment. In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. डायनामिक है, क्या उसको पहले से आपको पता होता है? नहीं, डायनामिक है। इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स that cannot be seen, but its presence can be felt in the way the organization function. Intangible जब कहा जाता है तो इसका मतलब समझो कि जिस चीज को हम लोग छू नहीं सकते, क्या हम लोग मैनेजमेंट को टच कर सकते हैं? नहीं। मैनेजमेंट जो है कैनॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, है ना। इसके आगे आता है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस कितने हैं? 5 प्रोसेस होती है जनरली। प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग रिलेट्स टू सेटिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड ऑल्सो डिस्क्राइब अ मैकेनिज्म टू अचीव देम एट वेरियस लेवल्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कमाल की बात है यार, 7 मिनट हो गया, मैं लाइव हूँ बट कोई भी आदमी नहीं है। दैट्स ओके। ठीक है यार, धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट के जो हैं हम उसके प्रोसेस को ले रहे हैं, है ना। प्लानिंग, planning means thinking in advance. Planning relates to setting goals, objectives, and targets, and also describe a mechanism to achieve. It requires you to have some strength. Thinking in advance। यार मेरे कमर में दर्द हो रहा है, एक सेकंड यार गाइस। 10 मिनट में मुझे क्या पड़ेगा? क्या बोलना बोलो। ठीक है यार, प्लानिंग पे पढ़ रहे हैं। गॉड। ओके,
Planning means thinking in advance. Planning relates to setting goals, objectives, and targets, and also describe a mechanism to achieve them at various levels throughout the organization. Organizing, it means the arrangement of resources to do different tasks in the organization. Staffing, it means the appointment of the right person at the right place or job. It includes the instructions, guidance, and motivation given by the manager to their employees and manager adopt their leadership task. Control is concerned with measuring and minimizing the difference between planned performance and actual performance. The monitoring performance as well as taking corrective actions wherever necessary. Management is a complex, integrated, and ongoing dynamic process. भाई समझ में आया अच्छा प्लानिंग तो समझ में आ गया चलो कि थिंकिंग इन एडवांस होता है और रिलेट करता है सेटिंग गोल से ऑब्जेक्टिव से एंड टारगेट से ऑल्सो डिस्क्राइब अ मैकेनिज्म फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है कि अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स टू डू डिफरेंट टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है स्टाफिंग क्या होता है इट मीन्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ जॉब Directing it includes the instructions, guidance, and motivation given by the manager to their employees to manage adopt their leadership task. And control is the concern with measuring and minimizing the difference between planned performance and actual performance. The monitoring performance as well as taking corrective actions wherever necessary. Thus, management is a complex, integrated, and ongoing dynamic process. ठीक है अच्छे तरह से समझ तो आ गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे आता है गोल ओरिएंटेड होता है नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल तो थोड़ा सा मैं मॉनिटर करता हूँ then let's I am reading let's see can we close it how to close it यार लाइव को बंद कैसे करना है